Good morning, sir. Good morning. So, Good morning, sir. good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, children. So, Good morning, sir. Good morning, sir. good morning. Good morning. Please note it down. Morning, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Don't make noise. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. Everybody got chance? Yes, sir. Yes, sir. Right. Children. Sir. First, note it down the syllabus, children, for this present week. Sir, you have posted in the group too. Yes, Yes, sir. sir. You have posted in group. Okay. Yes, Then sir. also, A I new have my chapter, na, sir? responsibility. Yeah. The syllabus is, repeat it, iodometry. Iodometry. Iodimetry. 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 Degree of hardness. Degree of hardness. Atomic structure. Atomic structure. Structure. Of hardness. कौन है जो एकदम लास्ट में Atomic structure. एकदम एकदम सिस्टमेटिकली Yes, थोड़ा children, I think. रिदम में बोलो, रिदम में. ओके. Okay, sir. Atomic structure. Atomic structure. Atomic structure. Fundamental particles. Fundamental particles. Particles. Their characteristics. Their Characteristics. Isotopes. Isotopes. Isobars. Isobars. Isomers. Isotones. Tones. Isoesters. Isoesters. Thomson atomic model. Thomson Atomic model. model. Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. Photoelectric effect Photoelectric effect. and their application. And their application. And black body radiation. Black body body radiation. radiation. Black body Okay. radiation. So have you noted down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then Sir, wait Hello. one. Hello, Sir, sir. after photoelectric, what it is written? application. Hello, sir. Yes. So this is a part of chapter 2, no? Yeah. From here we will start next chapter. Okay, sir. Just scroll up. Now. Okay, children. So we will start studying about iodometry, children. Okay. In iodometry, okay, this io stands for iodine. Okay, and this di stands for direct. Okay, and metry means calculation. Right, children? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. iodometry means we will use iodine directly in the reaction. Okay, in that Okay, sir. reaction or titration. Shall I move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, I2. Tell me, it is a atom or a molecule? Molecule. Okay. So it is a molecule.
Now tell me, it is a homomolecule or heteromolecule? Homomolecule. Homomolecule. Now tell me, it is an element or a compound? Element. Very nice. It is an element, right? Now tell me, what is its atomicity? 2. Atomicity is equal to 2, right? 2. Yes, sir. Okay. Now tell me its oxidation number. 0. Nothing is written means it is 0, right? 0. Yes, sir. Okay, right. And what we should know, that it is very less soluble in water, okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. And I2 generally exist in solid form, okay? Okay, sir. Okay, sir. But it can Okay, be sir. converted into vapor easily. Vapor form easily, right? Okay, sir. Okay, sir. Any problem, please let me know. No problem, sir. Okay, right, good. Now you know, in the conical flask, okay, when we Sir, it is iodimetry or iodometry? Now watch it properly. Okay, sir. Okay, sir. Got the point? Yes, sir. Okay. जरा सा अल्फाबेटिक में दिक्कत हो जाती, देखो दिन, ओके, एंड दान. दिन दान दोनों में अंतर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तब थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. Gatti. Okay, so it is iodimetry, okay? Iod. Okay, sir. First we will learn iodimetry, then we will go for iodometry. Okay. So repeat it at least 1,000 times. Iodimetry, 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 like this. Iodimetry to 10,000. So D means direct. You will come to know why I am telling direct like this. So anyhow, in this we will keep iodine, okay? Hello children. Yes, Yes, sir. 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 Okay, we will use some Ki solution also, children. Potassium iodide. Okay, Ki solution. Why? To make iodine more soluble in water, okay? Okay, sir. If somebody asks you why you are adding iodine, Ki, then what will be your answer? To make more solution. To make soluble iodine in water. Okay, children. Yes, sir. Why you are using Ki? To make soluble iodine in water. Yes. How it will be soluble? Because when you will use Ki, this iodine will be converted into I3 minus, I3 and 1 minus. Sir, what is the name of the ion? Just you tell me what should be. Iodide. No, iodide is I minus only. Iodide. Sir, Just you. hypoiodide. Okay, I will tell you name and everything. First you think that I2 is converted into I3 minus, and because it is anion is soluble in water, right? So, hello. Yes, sir. Yes. Okay, right. So what I am going to tell you is, now along with iodine we are using Ki. What is the use of Ki? To make more soluble in water. To make soluble iodine in water. It means iodine is itself is less soluble in water, right? Yes, sir. Okay.
Next is we will add some starch also, children. Starch. Okay. C6H12O6. Yes, beta. C6H12O6. C6. What formula you told? C6H12O6. C6H12O6. This is known as glucose. Glucose. Okay. Okay, right. Okay, sir. So simply just now I will discuss everything, starch, cellulose, everything. But right now you just think that it is a starch, polysaccharides. I don't want to deviate from the topic. So just you added starch in the solution of iodine, right? Okay. What color it will be? Blue. Blue. Blue color will be there. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. By the combination of iodine and starch, it will give you a blue color appearance, blue color solution. Beautiful solution, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then it means it can work like an indicator here. Indicator, right? How, sir? How, sir, means it's showing blue in color. Oh, Okay, and when we'll do the titration, this blue color will vanish, disappear. Okay, sir. As soon Okay, as the sir. color disappear, we will tell that reaction is completed. Okay, sir. We will get Okay, the sir. end point. yes, sir. So Yes, did you sir. understand? Yes, sir. Okay, now some more information is required for iodine. Okay, and that iodine is we have written. Tell me the molar weight of iodine, children. Hello, molar weight. No idea? 127. Yeah, 127 and 127. Yes, sir. 254. Yes. Yes, sir. 254 gram. What's your name, beta? Hello. Yes, sir. Yes, sir. What's your name? What's your name? Me, sir. Yes, yes. Sinjini Paul. Okay. Let me see you. Sanjini Me, Paul. sir. Yes. Where is that? Sanjini Paul, raise your hand. Raise your hand. Yes, sir. Okay, Sanjini Paul. Good, good. Are you coming in at doubt clearance session? Yes, sir. Okay, right. I will add you in that From 3 p.m. na? 4 p.m. beta. 4 p.m. Oh, yes, yes. Okay. So you have to attend some special classes also. I could find that you are having some extraordinary feature. Okay. Thank So in you, the sir. coming time, I think you will be the star of India, I think. Thank You have you, a sir. very nice, very nice. So anyhow, see, in front of all student, I am telling that this student has having some extraordinary feature. Really, she will be the one of the under 10 or under 50 student in the all over India level. From today onwards, I am telling you. Anyhow, Thank you, sir. I will try, sir. so the molar weight is 254 gram per mole, right? Yes, sir. Yes. Right. Next is, can you tell me the X factor over here of iodine? We can't say, okay? Yes, sir. X factor we can't say because unless and until we don't see the reaction, we cannot tell about X factor, Yes, sir. right?
Did you understand, children? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, X factor means number of electron exchange per molecule. Unless and until if we don't see the reaction, how can we say that what is the X factor? Yes, sir. Okay, now, so this is the situation for iodine. We have written everything for iodine. Why we have written everything for iodine? Because we are doing iodimetry, children. Iodimetry. So iodimetry means we will do reaction with iodine directly. Now the second player enters in the scene. Second player, children. Second player. Who is that second player? The second player is, we will add, okay, we are doing titration, no, children? Yes, sir. So titration means two things, conical flask and burette. Hello? Yes, sir. Yeah. So in burette we will keep another player. That player name is, that reactant name is, okay, Na2H2O3. Did you understand, children? Yes, sir. Yes, sir. So welcome this participant. Its name is sodium thiosulfate. Sulfate. Okay, sir. Yeah. Sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate. Can you write its formula? Yes, sir. Na2H2O3. Na2H2O3. O3. Right. Can you tell me it's, because it's a very big name, no? Sodium thiosulfate, like this. Yes. So for our easy and convenient, we have named as a common name. That common name is hypo. Okay, children? Only hypo. Only hypo, yes, only hypo. That is the interesting point. Only hypo. Right? Yes, sir. Okay. IUPAC name is? Sodium thiosulfate. Yeah. Sodium thio. Children, don't feel bad that only I have mentioned one name. Slowly I will identify some more 50 students, super 50 students. Did you understand, children? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Every sir. day by your talking, your writing, your scoring marks, everything I will decide, and our team will decide who are the stars of Bengal. Yes, sir. Okay, yes. Yes, sir. So don't worry. Just keep on working, means showing your performance. We will select automatically. Don't worry. So sodium thiosulfate. IUPAC name is sodium thiosulfate and common name is hypo. And its molecular formula is Na2H2O3. Right? Yes, Yes, sir. sir. Okay. And Na2H2O3. Okay. When you put in water, it will dissociate in this form. It will dissociate in this form, children. 2 sodium plus, and you will get H2O3 minus 2. Right? Yes, sir. So this is known as sodium and this is known as thiosulfate. Okay, its structure is like this, children. Okay, O and S, like this. Structure is like this. Yes, Do you sir. understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thiosulfate. Why thio? Because thio also means sulfur. Another name for sulfur is thio also, children. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Another name for sulfur is thio. This is the demerit of chemistry. For same thing, so many names are there. We cannot do. So we cannot do anything. And why we are calling it sulfate? See, sulfate formula is sulfate formula. S double bond O, O minus and O minus, right? Yes, sir. Sir. So it is sulfate. What is the formula of sulfate? SO4 minus 2. Yes, sir.
So just we are removing one oxygen and we are putting sulfur over there. That's why it is known as thiosulfate. कैसा वाला सल्फेट? सल्फर वाला सल्फेट. तो सल्फर वाला सल्फेट मतलब एक ऑक्सीजन हटा के वहां एक सल्फर लगा हुआ है. राइट बेटा? Yes, sir. Okay, right. So now we will go for the reaction. Now we will go for the reaction. When you will put this hypo, and you will start reacting with this iodine solution, no? Okay, then slowly it will become colorless, and that colorless is the end point. Colorless is the end point. We have to stop the reaction at that time, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we would like to know what is the reaction, what is going on. So see, I am writing the reaction. Iodine plus Na2H2O3 gives you, okay, sodium iodide, and you will get Na2S4O6. Identify each participant and name them. What is the name? This is what? Iodine. Iodine. What is this name? Sodium Sodium Hypo. thiosulfate. Yeah, hypo, or you can name as sodium thiosulfate. What is this name? Sodium iodide. Sodium iodide. Sodium iodide. Sodium iodide. Okay, what is this name? Sodium thioxylate. Okay, this name is sodium tetra. Why? Because 4 sulfurs are there. Tetra thionate. Okay, sodium tetrathionate, right? Yes, sir. Oh, yes, sir. Okay, now can we write this equation once again? Yes, we can write iodine plus Na2H2O3 gives you Sodium iodide. sodium iodide and Na2S4O6. 6. Okay, now we would like to balance it. So balance it. For balance it, what you required? 2, right? Yes, sir. So it's balanced. Nothing is written, 1 is written. Nothing is written, 1 is written. Is it balanced? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me the oxidation state of each and everything over here. Oxidation state. What is the oxidation state of iodine here? 0. 0. 0. Na Plus 2. +2. Plus 2. for one sodium Plus 1. 1. plus 1. And I am asking for 1 only, right? Yes, sir. Okay. What is the oxidation state of sulfur here? Oxidation state or oxidation number? Calculate, 4. calculate in your rough. +4. Plus 2. Huh? +4. Plus 4 for 2 sulfur, no? Yes, sir. Plus 2 for Yes, single Yes, sulfur. sir. For 1 sulfur Plus +2. 2. 2. Plus 2. or 1 sulfur plus 2. For 1 oxygen, Minus 2. Minus Plus 2. 2. yeah. Now in this, for sodium Plus 1. plus 1. For iodine, Minus 1. Minus 1. for sodium, Plus 1. Plus 1. for Plus sulfur, 1. Plus 2. Plus 2. 10 by check 4. it, check it nicely. For 1 sulfur, 1. for 1 sulfur. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Tell me, for 1 1 sulfur. minute, sir. 1 minute. Sir. So it's Ah. 10 by 4. 10 Yes, by sir. 10 by 4. 10 by 4 means? 2.5. 2.5 Yeah, 2.5 plus 2.5. Oxygen, minus 2. Minus 2. minus 2. In this way, you have to answer. Okay, sir. Okay, so now tell me, is it a redox reaction, children? Yes, sir. Are you sure? No, Hmm. sir. No, sir. Sir.
Yes, sir. Yes, It's sir. a redox Redox reaction. Yes, sir. reaction. Redox reaction. Who is telling that it's a redox reaction? Next participant, another than that S. Paul. Sir, I told. Sir, I am telling. One more participant was there. Yes, sir. What's your name? Salikin. Yes. Sir, Salikin. Okay, right. Shalikin. How much you scored in chemistry? CDF? 5 out of 5. Yes, yes, yes. Let me see. Who is this? Raise your hand. Where is this? Please raise Yes. your hand. Yes, sir. I'm unable to see you. Sir, raise my hand. Raise your hand. I couldn't find. Yeah, I got it. Sitar. What Yes, is full sir. name? Salikin Sitara Zamil. Okay, very nice, very nice. Okay. Wait, I'm writing these names. Okay, so right, so it is a redox reaction, children. Okay, redox reaction. sir. Why? Because from minus 0 to -1, right? Yes, sir. Yes, sir. So what had happened to iodine? Tell me. Reduction. 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 Okay, what had happened to sodium? Nothing, sir. Nothing, Nothing sir. happened. Nothing happened. So it is not necessary that something could happen only. There is a chance of nothing happen also. What had happened to sulfur? Oxidation. 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 Yeah, you can see. Okay, very minute oxidation, but it took place. Oxidation took place from 2 to 2.5. 2.5. Yeah, oxidation. So simultaneously reduction is also going on, oxidation is also going on. That is why. Yeah, it is a Redox reaction. reaction. Paul, you told that it is not a redox reaction, right? Yes, sir. Yeah, It's see, I am observing so carefully. A single mistake can bring our rank back. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now what had happened to oxygen? Nothing. Nothing sir. is happened to oxygen, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So who are the main players over here? Iodine and sulfur. Iodine, Iodine and and sulfur. sulfur. Iodine and sulfur, right? Good. Yes. Now I would like to know the. Okay. Now I would like to know the name of. What should I like to know? X factor about iodine, children. X factor. Tell me. Tell me what is the X factor of iodine? 1, sir. 1. 1. 1. Okay. Iodine means I2. I am asking about I2. Molecule. 2. Did you understand how to calculate X factor? Each I converted into I minus. I minus. Other I also converted into I minus. Yes, sir. So iodine has accepted electron. So altogether I2 accepted how many electron, children? 2. Hello? 2 electrons, sir. 2. 2. Two. So 2 electron been exchanged. So X factor is 2, children. You are correct. For simple I it is 1. But for I2 It's 2. 2. it is 2. So X factor is 2. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me the equivalent weight. Equivalent weight of I2.
254 by 2. by 2. Yeah, molar, whatever the molar weight divided by X factor. 127. 7. Yeah, so molar weight is what? 254 divided by 2. 63.5. What? 127. 127. 127, sir. Yes, 127 gram per equivalent, right? 127 gram per equivalent. See, I asked this question before also, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. But at that time, we No didn't reaction have, occurred. yeah, no reaction occurred, so we could not tell about X factor. Yes, sir. But now the reaction has taken place and we can easily tell about the X factor, right? Yes, sir. Okay, then tell me number of equivalents, children. Number of equivalents. 1 minute, sir. The 2. Number of equivalents. So number of equivalent can be used by this formula. We can't say number of equivalent. We will first we require W. Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Every time we can't say anything unless and until we get some information. Yes. So for number of equivalent, what you required? W by E. W. What is the weight of W. iodine? What is the weight of iodine is reacting? Did you understand? Yes. Yes, sir. So number of equivalent is equal to W by E. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay. I want to add one more feature over here. Number of equivalent is equal to W into purity. Purity. Did you understand purity factor? Hello? Yes, sir. How many of you have not understand why I am using purity? I have not understood. Yes. Yes, sir. Me not so. Be bold to ask and be frank and free Yes, to sir. Do ask. not Please understand. understand this, sir. Yes. Okay. Don't understood. Yeah, definitely. I have intentionally given that. I know that 99% has not understand. Okay. So purity means, see, suppose this is the sample, children, and I told here iodine is there and the weight is 100 gram, right? Yes, sir. Hello? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, and I told that purity is 50%. Mm. Purity is 50% means it is confirmed that along with iodine, some impurities are also there. Right? Yes, sir. Yes, sir. So when the total weight is 100 gram, okay. Total weight is 100 gram, but purity is 50%. It means only 50 gram iodine is present and 50 gram is impurity. Beautiful. Yes, sir. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So that's why suppose 100 gram is of the sample and purity is 50%. So we will multiply this. Did you understand? Yes, sir. Yes, So that sir. we Yes, can sir. get the exact weight of the iodine, Okay? Mm. Okay, sir. Okay, sir. Okay, right. Okay, sir. Okay, now again, number of equivalent is equal to, suppose W is given and nothing is given to you about purity. So we will consider default as 100% pure, okay? Okay, sir. Okay, sir. When Okay, nothing sir. is given about purity, by default we will consider that 100% pure sample. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Okay, Number sir. of equivalent, yeah, W divided by equivalent weight, or we can write like this, W by M. But when M is there, we have to divide by X factor so that we can get the equivalent mass, right? Yes, sir. Same So thing. that will come over here, X factor. Did you understand? Mm. Yes, sir. We can use this equals also, number of equivalent is equal to, what is this? Number of moles.
Yes, sir. Yes. Into X factor. आया समझ में बेटा? Yes, Yes, sir. Sir, sir. समझ में आ गया. Why I am giving you so many formula? I want to make you perfect. So we will be searching number of equivalents. So we don't know how can we calculate number of equivalents. That's why I am giving you so many formulas, so many process, so many ways, so that you can easily calculate the number of equivalents. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. आप इस तरीके से भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं. ओके, तो प्योरिटी का फॉर्मूला थोड़ा बताइए ना अगेन. प्योरिटी का फार्मूला परसेंटेज में आएगा बेटा. परसेंटेज में ये देखो, प्योरिटी का फार्मूला परसेंटेज में देगा. जैसे मान लेते 20% ऐसे देगा. ठीक है, ठीक है. जैसे मान लिया वो बता दिया कि 100 ग्राम सैंपल है, 100 ग्राम सैंपल है और उसका प्योरिटी 20% है. राइट? तो इससे हम लोग को ये समझ लेना है कि 100 ग्राम हो गया ये वाला W और प्योरिटी 20% है. 20 डिवाइडेड बाय 100. राइट? Yes, sir. तो पूरा सैंपल में आयोडीन कितना ग्राम रहेगा बोलो? 20 gram. 20 ग्राम ही रहेगा. राइट? Yes, sir. Yes. आया Yes, समझ sir. में बेटा? Yes, sir. हाँ, तो जो भी प्योरिटी दिया रहेगा ना 20%, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है sir. ठीक है? ठीक है sir. अभी जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक दो बार और प्रैक्टिस हो जाएगा, तो डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. ठीक है sir. ओके, और कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. Yes, sir. ठीक है? Yes sir. ये भी निकालने का तरीका है. नंबर ऑफ सॉरी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम. राइट? Yes sir. और नॉर्मलिटी कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मलिटी Molar weight into X factor. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का तो कितना बार फार्मूला दे दिया हम. देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट W by E वॉल्यूम इन लीटर. राइट? देखो नॉर्मलिटी ऐसे निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है? और भी मैं चीज बता रहा हूँ. देखो नॉर्मलिटी और कैसे निकाल सकते हैं? मोलारिटी इनटू Into एक्स X फैक्टर. factor. Yes, sir. देखो कितना फार्मूला जनरेट हो गया. ऊपर से जा रहा है क्या बात साहब? No, sir. नहीं sir. Yes, sir. ठीक है, ये सब फार्मूला है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर आप स्टोर करके नहीं रखिएगा मेमोरी में तो प्रॉब्लम होते जाएगा. Yes, sir. ये रिलेशन किसका है? नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी. Polarity. ठीक है? अगर एक्स फैक्टर 1 हुआ तो दोनों चीज बराबर हो जाएगा. हाँ. ये तो क्लासिकल फार्मूला है नॉर्मलिटी निकालने का. Yes sir. ठीक है? ये नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकलते हैं. लगा. बहुत सारे तरीके हैं. चलिए, ये हो गया आयोडीन से. अब कितना टाइम बच गया बता दो? 10 मिनट है. कितना? 10:38 है, बज रहा है. हाँ ठीक है, तो रुको. अभी हम लोग एक प्लेयर का बात किए, अब हम लोग दूसरे प्लेयर को ला रहे हैं. ठीक है? सल्फर. Na2 या Na2H2O3. सर इसमें यस, इसमें इंपॉर्टेंट रोल सल्फर का. नाम बोलो. Hypo. हाइपो. Hypo. ठीक है? इसका एक्स फैक्टर बोलो. 1. एक्स फैक्टर. तो एक्स फैक्टर के लिए आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा. ठीक है? Yes sir. इसका एक्स फैक्टर देख रहे हो, इसका या इसका? इसमें हाइपो कौन है बेटा? Na2H2O3. या ये हाइपो नहीं है. राइट? ये है हाइपो.
हम एक्स फैक्टर sir. किसका पूछ रहे हैं? हाइपो का। Yes, sir. तो यहाँ पर एक सल्फर पे 2 है ना, हाँ. तो 2 सल्फर पे कितना हुआ? 4. 4 हुआ। यहाँ Yes, एक sir. सल्फर पे 2.5 है ना, Yes, sir. तो 2 सल्फर पे कितना होगा? 5 Five. होगा. 5 Five. होगा। हम क्यों 2 ही सल्फर की बात कर रहे हैं, 4 की क्यों नहीं कर रहे हैं? S2 is the hypo. क्योंकि हाइपो में 2 सल्फर है। Yes, हाँ, sir. sir. तो हम जिसके बारे में बात करेंगे उतना ही नंबर लेंगे बस। Yes, sir. एकदम 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 मतलब क्या बोले उसको, एकदम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। Okay, हम sir. क्यों 2 सल्फर की बात कर रहे हैं? Because in क्योंकि hypo, इस पूरे मॉलिक्यूल में दो ही सल्फर कितना है? सल्फर का एटॉमिसिटी कितना है? 2. 2 है। तो 2. हम 2 ही सल्फर के बारे में बात करेंगे। Hmm. कोई डाउट? No. नहीं, sir. No, sir. चलो, No, sir. कितना एक्सपेक्टर आ गया यहाँ पर? 2. 2. 2 कैसे आ गया 2. बेटा? पहले 1, 4 था, 1, 1. 4 था, अभी 5 हो गया। 1 होगा, sir. 1, sir. 1. 1 होगा। 2 कौन बोला बेटा? Sir, क्यों बोला बेटा? Sir, mistake. My mistake. नहीं, Okay. कुछ तो सोच के बोला होगा ना बेटा। So I think atomicity is 2. That's why. क्या? So atomicity 2. अच्छा, एटॉमिसिटी 2, राइट। चलो एक्स फैक्टर बताओ इसका, हाइपो का। 1. 1. 1, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट बोलो, 2. पहले फार्मूला बताओ। मोलर वेट Molar weight by डिवाइडेड X बाय factor. एक्स फैक्टर, मोलर वेट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, sir. अब मोलर वेट कैलकुलेट कर लो एक बार। जोड़ो। 158. 2 सोडियम, 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन। 2 सोडियम का वेट कितना होगा? 23 into 46. 3. Then 64, then 48, right? 158. 32, 16. 158. Yes, sir. ठीक है बेटा? 158. Yes, Yes, sir. sir. 158. 158. So ये 158 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। So इसका वेट हो जाएगा 158 ग्राम पर इक्विवेलेंट, Excellent. राइट? Yes, sir. Yes, sir. इस रिएक्शन में इसका एक्स फैक्टर 1 है। Hmm. ओके। Sir, one doubt, sir. 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 वेट मिनट। करण, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। करण, ओके, इज नॉट देयर। हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन करिएगा सर, कैलकुलेशन। Thank you, sir. Thank you, क्या बेटा, sir. क्या बोला? सर ऊपर का रिएक्शन में सल्फर का कैलकुलेशन एक्सप्लेन कीजिए। ठीक से बोलो बेटा, जल्दी, थोड़ा जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। सर सल्फर का कैलकुलेशन एक्सप्लेन करिए ना। सल्फर में कैलकुलेशन हाँ, एक्सप्लेन सर। तो एक्स फैक्टर के कैलकुलेशन उसको समझ में नहीं आया। हाँ देखो, या इस पूरे मॉलिक्यूल में सोडियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का भी चेंज नहीं हुआ। यस सर। किसका चेंज हुआ? सल्फर। हाँ, यहाँ कितने सल्फर है? सर 2। 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। हेलो, 4 सर। उसको बोलने जिसको समझ में नहीं आया। 2 सल्फर का, यहीं पर ना उसका प्रॉब्लम है। 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो बेटा। नो आइडिया? नो सर। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है बेटा, है ना। इसके लिए तुमको ये वाला काम करना पड़ेगा। देखो ये वाला,
Na2H2O3। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का काम जो पहले हम लोग कर चुके हैं, वहां पर प्रैक्टिस नहीं किए इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। देखो, एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है बेटा। यस सर। हाँ, तो 3 जन मिलके कितना होगा बोलो? -6। -6 होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सोडियम का कितना है? +2, दोनों मिलाकर। यस सर। तो दोनों सल्फर का मिलाकर कितना होगा? +4। वही पूछ रहा था ना, दोनों सल्फर का कितना है? +4। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, उसी तरह से यहाँ सल्फर का +4 हो गया, और यहाँ पर सल्फर का कितना आ गया? 2 सल्फर का 5। तो 4 से 5 कितने का डिफरेंस आ गया? 1। उसी को एक्स फैक्टर बोलते हैं बेटा। आया समझ में? यस सर। ओके ओके। चलो, इक्विवेलेंट वेट इसका इतना आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसका कैसे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बेटा इसका? क्या क्या दिया रहना चाहिए? Weight. वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट? Yes, sir. यस सर। और अगर प्यूरिटी जोड़ दिया तो W into purity. purity by E. E। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट W भी दे दिया, प्यूरिटी भी दे दिया, और इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया, तो मोलर वेट दिया है। फिर Molar. तो इसको, हाँ, एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दो। फैक्टर। तो वो जैसे ही एक्स फैक्टर से डिवाइड होगा, वो एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ओके। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? N2V2। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। No, sir. This one. ओके, देखो ये सब तरीका है, सब हम निकाल सकते हैं। और कैसे निकलेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ मोल इनटू एक्स फैक्टर। Yes, sir. हाँ। नॉर्मलिटी कैसे निकलेगा? नॉर्मलिटी Number of equivalents by By volume in volume liter. in liter. और कोई तरीका? W by E And into volume in molarity. liter. So molarity into और कोई X तरीका? factor. Molarity into X factor. समझ में आ गया बात? Yes, sir. अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग जब शाम को क्लास करेंगे तो एकदम ये सबके ऊपर पूरा प्रॉब्लम, मैंने जितना भी इसके साथ जो जानकारी था सब दे दिया है। ठीक है, Okay, sir. अब हम लोग खाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एकदम। और ये फॉर्मूलाज में आपको देखना पड़ेगा। आपका खाली काम क्या रहेगा? कौन सा इक्वेशन धड़ाम इक्वेशन यूज कर ले, राइट? Yes, sir. यस सर। ऐसे ऐसे पूरा यूज करते जाना। पूरा सारा चीज आपको दे दिया। ये सब हम लोग किससे रिलेटेड है? आयोडीमेट्री। Trimetry. चलो, कितना बज गया अभी? So 10:47. 48. 48 हो गया, राइट? 2 minutes are left, sir. हाँ, 2 मिनट्स मोर। हम लोग करेक्ट समय में हम लोग सब चीज में आ गए। एक बार खाली हम रिवीजन कर देते हैं, मेरे को खाली बताओ ना। हाँ, ओके। चलिए, पहले तो मेरे को ये बताओ एक बार, देखो फटाफट 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर देंगे। चलो, इस वीक का सिलेबस बोलो। बोलते जाओ। Atomic structure, स्ट्रक्चर, fundamental फंडामेंटल particles, पार्टिकल्स, their characteristics, isotopes, Thomson's Rutherford atomic model, optoelectric effect and applications, blackbody radiation. photoelectric effect and their application, black body reaction. गुड, वेरी नाइस। अब मेरे को बताओ, आयोडीमेट्री में क्या होता है? Sir, direct Direct reaction of iodine. calculation of Iodine. ओके, राइट। चलो, I2 बताओ, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? Element. एटॉमिसिटी बोलो। 2. होमोमोलिक्यूल है या हेटेरोमोलिक्यूल? Homomolecule. राइट। स्टार के साथ इसका कलर कैसा हो जाता है? Blue. पानी के अंदर इसका सॉल्युबिलिटी कम है या ज्यादा? कम। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? KI solution add करते हैं। ओके। आयोडीन का किस फॉर्म में चला जाता है? किस आयन फॉर्म में चला जाता है?
I3 minus. I3 माइनस में चला जाता है, I2 और I माइनस मिल करके I3 minus. I3 minus. इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास लोन पेयर होता है, ये मिल करके I3 माइनस बना लेते हैं और आयंस पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। कलर क्या होता है आयोडीन और स्टार्च का? Blue. ब्लू। ठीक है, फिर हम लोग आयोडीन को किस में डालते हैं, ब्यूरेट में या कॉनिकल फ्लास्क में? Conical. Conical ब्यूरेट flask. ब्यूरेट में क्या डालते हैं, ब्यूरेट में? Sodium Hypo. और Hypo. जब हम ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंड पॉइंट में क्या कलर आएगा? Colorless. colorless. Color fade हो जाएगा. कलर फेड हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। ओके ओके, इस रिएक्शन में कॉमन नाम क्या है Na2H2O3 का? Oh. IUPAC नेम क्या है? Sodium bisulfate. ओके, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? Yes, sir. किसका रिडक्शन हो रहा है? Iodine. और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Sulfur. यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Reducing agent so salt. Na2H2O3. इतना बोलने क्या दरकार है, सीधा हाइपो बोलो। Hypo. ओके, इसमें आयोडीन का एक्स फैक्टर कितना है? 2. हाइपो का एक्स फैक्टर कितना है? 1. 1। आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं? Molar weight Molar by weight by X factor. मोलर वेट बाय 127 होगा. या 127 होगा। Gram per equivalent. ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो time चलिए, over. टाइम ओवर हो गया। हम लोग ना 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? खूब सारा प्रॉब्लम बनाएंगे इस पे। कैसा था टॉपिक ये वाला? Nice. अच्छा था. ये हाँ, इंटरेस्टिंग भी है, स्कोरिंग भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसलिए मैंने इसको बहुत तोड़ तोड़ के समझा दिया। सबको एक साथ जब कंपाइल करोगे तो लगेगा क्या गजब का टॉपिक आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, ओके, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day. थैंक यू, सेम टू यू।